do some rotations in that field, you know, and that's when it will spark your interest in that. आपको नहीं समझ आएगा research करके आपको कैसे पता चलेगा कि यार cardiologist क्या करते हैं, like it's never the same. आपको कैसे पता चलेगा एक critical care doctor क्या करता है या hospitalist क्या करता है. Welcome everyone to episode 1 of our Future Career podcast series. Today we hope to talk about the medical profession and आज हम चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल से उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एंड उसको किस तरीके से अपना करियर आगे लेके चलना चाहिए स्पेसिफिकली इन द यूएस. इसके लिए वी हैव इनवाइटेड टुडे डॉक्टर इब्राहिम आबिद. So welcome Dr. Ibrahim Abid. Thank you for joining us today. Thank you, Mustafa. So I understand that you are right now practicing as a hospitalist at St. Mary's Hospital in Connecticut. Yes. So how has your experience been so far? It's काफ़ी अच्छा experience अभी तक रहा है. I went to the US after a year or so after my graduation, did my residency in New York. और उसके बाद ये मेरा पहला जॉब था एज अ हॉस्पिटलिस्ट एंड आई फील काफ़ी अच्छा रहा स्टार्टिंग ऑफ विद अ प्रोग्राम विच आई जॉइंड इन बिकॉज अगेन दिस वाज आल्सो यू नो इट वाज़न्ट अ सुपर बिजी जॉब बट एक सफिशेंटली इस तरह का था कि जिसमें मैं यू नो बहुत सीखने को मिलता था. I would see an optimum amount of patience. So अच्छा रहा है. So एक जनरल परसेप्शन रहता है पाकिस्तान में कि यूएस में जाके लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ये जर्नी जो है ये इतनी आसान नहीं है एंड ओनली अ सेलेक्ट फ्यू पीपल आर एबल टू मेक इट और उसके भी रीजंस होते हैं विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू बट ये है कि इट्स फॉर मोस्टली फॉर द प्रिविलेज्ड पीपल. तो यू योरसेल्फ स्टडीड एट सेंट मेडिकल कॉलेज. तो हाउ वुड यू लुक बैक एट योर जर्नी एंड हाउ डू यू फील कि ये जर्नी करना मुश्किल है आसान है. हाउ वुड यू गो अबाउट लुकिंग बैक एट योर एक्सपीरियंस. सो अगर पहले तो कि सिर्फ प्रिविलेज के लिए तो मैं माई सेल्फ यू नो कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली सो ऑब्वियसली टफ रहता है उसके अपने चैलेंजेस रहते हैं बट इट्स ऑलवेज डूएबल. इट्स आपको थोड़ा प्लान आउट करना पड़ता है. ऑब्वियसली स्ट्रगल काफ़ी रहता है ड्यूरिंग द जर्नी. एक फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है फिर हर चीज़ जो मैनेज करना पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है बट इट्स डेफिनेटली डूएबल फॉर एनीबडी यू नो वांटिंग टू गो हेड विद इट. देयर इज़ सफिशेंट सपोर्ट आउट देयर एज वेल विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. हमारी अपनी कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव होती है इन बहुत सारे टर्म्स में. आपको अगर फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए या फिर आपको यू नो जो लॉजिस्टिक्स होते हैं स्पेशली वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं अगर आप फाइनेंसेस मैनेज भी कर लें तो उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहता है वहाँ पे. सो मुझे थोड़ा बताएं कि जब व्हेन यू वर अबाउट टू फिनिश med स्कूल तो हाउ डिड यू गो अबाउट रिसर्चिंग अबाउट ऑप्शंस इन यूएस और यूएस में आपको जाने का जो इरादा बना है उसके हवाले से क्या आपने रिसर्च की क्या करना चाहिए. सो व्हाट वुड योर एडवाइस बी. सो मेरा जो था आई हैड लाइक आई वाज लकी इनफ टू हैव सम फैमिली इन द यूएस. 2 siblings, 1 cousin, 1 sibling, you know, who was already kind of embarking on that journey. Both of them, unfortunately, they did not go with the US, but they're doing well in wherever they, you know, went through with their journey. But उनके through मुझे काफ़ी एक support, एक guidance रही थी. मुझे already थोड़ा बहुत एक path पे था. But you only learn once you get into it. So around, आप कह सकते हो first 2-3 years of med school, I would, you know, talk to people who were doing it, specifically the seniors who were, you know, who were going on this journey. Because आपको जो भी बहुत, you know, उस वक्त जो लोग कर रहे होते हैं उसी से आपको exact guidance मिलती है कि अभी आजकल, you know, what is more important in those days. So I would make it a habit to, you know, speak with them. There would be talks like, you know, obviously उस time में podcast नहीं होते थे, but we would have like talks and we would have like, you know, people come in from outside to, you know, speak at a university. I would attend those and online obviously आपको थोड़ी बहुत guidance मिल जाती थी. तो वो सारी चीज़ें मैंने की और फिर around 4th year is when I really got serious. मैंने अपने steps, कुछ लोग होते हैं वो अपनी med school के दौरान दे देते हैं. US Assembly के आपके 3 steps होते हैं जो कि इनफैक्ट 4 एग्ज़ाम्स होते थे हमारे टाइम पे. पहले 2 होते थे, दोज वर लाइक बेसिकली यू नो रिटन एग्ज़ाम्स जो होते थे और एक आपको वहाँ जाके क्लिनिकल स्किल्स का एग्ज़ाम देना होता था. तो वो इन पर्सन होता था, आपका सिमुलेशंस होती थी. तो वो 3 एग्ज़ाम्स होते थे. उसके बाद यू कुड अप्लाई फॉर द मैच एंड देन देयर वाज अनदर स्टेप
which you could give during your residency. So around fourth year I got a little bit more serious with it. मैंने अपनी पढ़ाई साथ साथ की अपने med school के एग्ज़ाम्स के साथ. हमारा कोर्स जो जिस तरह हमें पढ़ाते हैं med school में, it's very different from the way the exams are, structured USMLE के. So it always requires that extra effort because you can although simultaneously study because चीज़ें तो वही होती है, but the way you need to like understand things is very different. Simple example दूंगा कि हमारे med school में थोड़े रट्टा based questions होते थे कि भाई जिस दिस इज़ द आंसर ये है, सवाल पूछा डायरेक्टली उसका आंसर आपको याद होना चाहिए तब आप दे सकते हो. USMLE exams are like second or third tier structure. आपको चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाएगी and you need to find the clues in those in that stem. So that's a little different. So मैंने उस तरह से पढ़ना अपने exams के लिए शुरू किया fourth year में, and around after my fifth year in 6 months I was able to do step 1. Like 6 months मैंने लग के पढ़ाई की सिर्फ उसकी and step 1 कर लिया और फिर मैं US चला गया. वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक अच्छा टाइम था और सबसे टफ़ टाइम भी था बिकॉज वंस यू गो देयर US में मैंने जाके मुझे रोटेशंस करनी थी और रोटेशंस आर मोस्टली इधर यू कुड डू क्लिनिकल इलेक्टिव्स जो हैंड्स ऑन होते हैं, दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एंड वो आपको यूजुअली दे आर पेड, यू नीड टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू गेट टू डू दोज क्लिनिकल रोटेशंस. एक होती है ऑब्जर्वरशिप्स इन विच यू गो and you basically tag along with a doctor there and they kind of tell you how the system works and you pick things up from there, but you won't do anything hands on. They can be very boring sometimes, and also they can also ruin your chances because you need to remain interested in order to impress the doctor as well, because the end goal वो होता है कि आपको सीखना तो है लेकिन आपको उसको impress भी करना है so that he recommends you in a good way. So वो चीज़ की हमने 4 से 6 महीने तक मैंने वहाँ पे लग के की, एग्ज़ाम्स दिए अपने जो क्लिनिकल स्किल्स का, एंड देन आई केम बैक एंड डिड माई स्टेप 2, जिसके अंदर इतना टाइम नहीं लगा था, 4-6 महीने लगे थे, बट वो एग्जॉस्टिंग प्रोसेस था थोड़ा सा. जो 2 साल थे आई वुड से सबसे अच्छे थे, सबसे फॉर्मेटिव थे मेरे लिए, बट सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी थे. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैच के लिए अप्लाई किया मैंने उस साइकिल में. एंड देन आई कैन गेट इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दैट एज वेल कि मैच का किस तरह से होता है प्रोसेस. जी, सो इफ़ यू कैन टेक अ स्टेप बैक, आपने Right. you've mentioned कि आपने एमिलीज के लिए अपीयर किया, विच आई अंडरस्टैंड मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन Right. US के. Yeah. तो थोड़ा हम जस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स क्लैरिटी आप थोड़ा बताएं कि वंस यू हैव कंप्लीटेड MBBS, पाकिस्तान में 5 साल का MBBS है, वो जब कंप्लीट होता है और आप प्रैक्टिसिंग फिजिशियन बन जाते हैं US के अंदर, Right. ये दो एसेंशियली माइलस्टोन्स हैं कि आपकी ग्रेजुएशन हुई MBBS की और आप एक फिजिशियन बन गए जो प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर एज अ डॉक्टर इन द US. तो इसके बीच में व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशंस, तो उसको अगर आप थोड़ा इफ़ यू कैन कवर दोज तो विल Sure. बी वेरी हेल्पफुल. हाँ हाँ सही. तो जो आप बेसिकली स्टेप्स तो देने USMLE वो आपका सबसे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करेंगे. उसके साथ आपको इस दौरान अगर आप किसी को जाके US में बोलेंगे मैं ये 2 साल आप क्या कर रहे थे, मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, सो वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो तुमने अपना टाइम ज़ाया किया है. बेसिकली पढ़ाई तो तुम मेड स्कूल में कर लेते, तुमने तब क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ के ग्रेजुएट्स दे विल गेट डन विद देयर स्टेप्स एंड एग्जाम्स मोस्टली ड्यूरिंग देयर मेड स्कूल टाइम, और उनके हिसाब से 2-2 साल नहीं लगने चाहिए एग्ज़ाम्स देने में. बट वो इधर की डायनामिक्स नहीं समझते कि बिकॉज वी डोंट स्टडी दैट वे इन आवर मेड स्कूल्स, इट टेक्स टाइम फॉर अस टू गेट थ्रू. लोग 2 से 3 साल ऑन एवरेज लगाते हैं उस टाइम के लिए. तो उस टाइम पे आपको रेलेवेंट रहने के लिए डेफिनेटली मैंने उस टाइम पे थोड़ी रोटेशन, जैसे मैंने US जाके की 4 to 6 months. उसके अलावा पाकिस्तान में भी आई वुड जस्ट कीप ऑन ईदर मैं जैसे हमारे ऑब्वियसली हमारे हॉस्पिटल में हमेशा ज़रूरत होती थी जना सिविल में, टाइम टू टाइम मैं वहाँ भी जाता रहता था. कुछ लोग होते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड हाउस जॉब कर लेते हैं, मैंने एक ऐसी अनऑफिशियली जाके अपनी थोड़ी बहुत रोटेशंस वगैरह कर लेता था. जब भी मेरे कहीं ऑब्वियसली फ्रेंड्स पोस्टेड होते थे, दे वुड बी लाइक अच्छा आप कर सकते हो. ऑब्वियसली आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती थी बट एक तरीके से ऑब्जर्वरशिप भी होती थी, बट देयर इज़ ऑलवेज हेल्प नीडेड ओवर हियर, सो यू कुड डू दैट. उस तरह से मैंने वो सारी चीज़ें भी अपने टाइम को यूटिलाइज बेटर करने के लिए की थी. और ऑब्वियसली हेल्प करती है, आप पैसिवली बहुत चीज़ें पिकअप करते हो जब आप जाते हो, स्पेशली अपनी यहाँ की हॉस्पिटल्स में जहाँ पे इतनी पैथोलॉजी आपको देखने मिलती है. सो वो सारी चीज़ें भी की मैंने, और बाकी जो US की रोटेशंस मैंने आपको बताया, दोज वर इम्पॉर्टेंट थिंग्स.
थोड़े बहुत टाइम आप ऑब्वियसली यू कैन जस्टिफाई व्हेन यू आर बेसिकली जस्ट स्टडीइंग, यू कैन टेल देम हाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, कोई फैमिली चीज़ें, यू नो सम पीपल गेट मैरिड, थिंग्स हैपन इन लाइफ एज वेल, दे ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट. बट सिर्फ आप बोलो कि मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, दैट माइट नॉट बी यू नो इंटायरली वेरी, दैट माइट नॉट कम आउट एज वेरी एक्सेप्टिंग, यू नो जब आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे. सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. USMLE के लिए पढ़ना भी ऑब्वियसली चेंजेस टाइम टू टाइम, नए नए मटेरियल्स आते रहते हैं, नई किताबें भी आती रहती है, बट उसकी भी कुछ चीज़ें थी विच यू हैव टू डू इट. क्वेश्चन बैंक्स, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता था. मैंने आई थिंक कुछ 3 क्वेश्चन बैंक्स कर ली थी, और एक आई थिंक क्वेश्चन बैंक में काफ़ी अराउंड 500-600 क्वेश्चंस होते हैं. तो जब मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे, तो उसके बाद मुझे डर नहीं लगता था ना लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ के उसमें से क्लूज पिक आउट करने में. सो आई थिंक दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक उसकी प्रिपरेशन में इट्सेल्फ फॉर दोज यू नो 6 months. बाकी ये कि एग्ज़ाम इट्सेल्फ इज़ एन 8 hour एग्ज़ाम. एटलीस्ट उस चार मैंने कब दिया था, 5 साल पहले जब दिया था, 6 साल पहले, तब 8 hour एग्ज़ाम था. सो उसके लिए आपको जो एक स्टैमिना बिल्डअप करना होता है कि उतनी देर आपको बैठ के, ऑब्वियसली यू गेट ब्रेक्स, आप खा पी भी सकते हैं बीच में जो भी है, बट लाइक 8 hours स्टिल आपको एक दिन में बैठ के एग्ज़ाम्स देने हैं. तो उसके लिए भी मैं अपना स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए आई वुड डू लाइक 2 to 3 सिमुलेशन एग्ज़ाम्स. अगर 8 hour का एग्ज़ाम है तो मैं 15 घंटे एग्ज़ाम करता था. मैं कभी कभी 18 घंटे तक बैठ के क्वेश्चंस कर लेता था कि एग्जॉस्ट ना हो जाए बंदा. ऑब्वियसली एक रिगरस प्रोसेस, ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो बोलेगा यार ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज़ें ना इस तरह से पढ़ना. बट आई गेस वंस यू गेट इन टू द फ्लो एंड वंस यू कमिट योर सेल्फ, तो इट डिडंट सीम लाइक दैट. इतना मुश्किल नहीं लगता था उस टाइम पे. ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेटिंग होता था कभी कभी, इतने पढ़ने के बाद भी आपके सिमुलेशन एग्जाम्स में स्कोर्स नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें हो रही होती थी उस टाइम पे भी. बट ये था कि बस आप, इट वॉज अबाउट अच्छा नहीं हो रहा, आपने एक और बार रिवाइज़ की चीज़ें जहाँ पे आपको वीक स्पॉट्स हैं, नेक्स्ट टाइम यू डू इट यू विल ऑब्वियसली गेट इट राइट. तो उस तरह से मैं अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता था कि सारे मैंने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए इतने टाइम में, 5-6 महीने में, एंड देन आई वर्कड ऑन दोज थिंग्स टू. Okay. So once you were done with your MLEs, step one और step two आपका complete हो गया, फिर आपने जैसे you talked about the matching process. So how did you identify universities, or do you get to identify universities? How many universities can you apply to for residency, I believe? So if we can talk a little bit about that as well. राइट राइट. सो जब आप अप्लाई करने हम जाते हैं ना, सो देयर इज़ लाइक, एक तो आपने यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की, देयर आर यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड प्रोग्राम्स, एंड देन देयर आर बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम. जैसे आपकी यहाँ के, मैं हॉस्पिटल का मुझे ऐसे दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रहा, जैसे आखान है स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी बेस्ड हॉस्पिटल प्रोग्राम. इवन जैसे आपकी जिना हॉस्पिटल है वो भी, और सिविल हॉस्पिटल, ये सारी यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम्स अगर यूएस में होते इस तरह कहलाते हैं. आप कोई और जैसे इंडस हॉस्पिटल हो गई, दैट्स बेसिकली एक कम्युनिटी हॉस्पिटल की तरह आप कह सकते हो, बिकॉज उसके साथ कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड नहीं है. तो 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं. एक परसेप्शन है कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स आर ईजियर टू मैच, और वहाँ पे ही ज़्यादा IMGs मैच होते हैं, एंड आई गेस इट्स ट्रू टू एन एक्सटेंट. यूनिवर्सिटी में आपको पहले जाके वंस अगेन यू हैव टू रोटेट विद देम, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फेमिलियरिटी, या रिसर्च, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट देयर क्राइटेरिया बिकम्स when you apply there for them to invite you for an interview. So you identify those programs, and then again there is a big divide. There's IMG friendly, which means international medical graduates, and American medical graduate friendly programs. So अब उसकी बहुत एक रिगरस प्रोसेस उसका भी एक होता है हमें, ऑल बट कह सकते हो 2 दिन लगेंगे आपको वो चीज़ करने में, अगर आप थोड़े बहुत ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठते हो. देर इज़ अ फुल डेटा बेस जिसमें बताया हुआ है इस प्रोग्राम में कितने IMGs मैच हुए हैं और कितने AMGs मैच हुए हैं. ठीक है, और वो स्पेसिफिकली उस पर लिखा भी होगा कि IMGs या वीज़ाज़ को इंटरटेन करते हैं. बेसिकली दैट्स व्हाट वी नीड अ वीज़ा टू गो वर्क देयर फॉर द रेजिडेंसी एज वेल. सो देयर इज़ अ डेटा बेस देयर. यू गो स्टेट वाइज, आप ऑब्वियसली अपना लोकेशन भी पिक करते हैं, आप स्टेट वाइज करते हैं. यूजली IMGs दे अप्लाई मोर वाइडली, उनको कोई परवाह नहीं करते ज़्यादा कि कौन से स्टेट में कर रहे हैं, इतने चूज़ी नहीं हो सकते हम कभी उस टाइम पे. सो ये वाइडली अप्लाई हम देखते हैं अच्छे प्रोग्राम्स जहाँ पे IMGs ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ IMGs, एंड देन वी शॉर्ट लिस्ट दोज प्रोग्राम्स. एंड देन देर इज़ अ फुल पोर्टल, बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड इनका सिस्टम बना हुआ है, जिस पर आपका पोर्टल होता है, आप उस पर वो ऐड करते जाते हैं प्रोग्राम्स. एंड देन इवेंचुअली यू कैन लाइक, जब मैच डे हो, जब एज एन एप्लीकेशन डे खुलता है उस टाइम पे यू कैन सेंड आउट योर एप्लीकेशन, यू कैन प्रिपेयर देम ऑल टुगेदर,
एक साथ आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट हर चीज़ अपने लेटर सारे जमा किए उस पोर्टल के ऊपर सारे डॉक्टर्स के, एंड देन यू अप्लाई ऑन द मैच डे विद वन क्लिक बेसिकली हो जाता है. बट जो उसका प्रोसेस होता है, इट टेक्स अबाउट 4-5 days इफ़ यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ. इफ़ यू डू इट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपका 1-2 दिन में हो जाएगा. हम साथ बैठे थे एक दिन सारे दोस्त 3-4, सब ने 2-2 3-3 स्टेट्स पकड़े. उसमें जो भी जो प्रोग्राम्स IMG फ्रेंडली थे, वी पुट देम ऑन आवर लिस्ट, एंड देन सब ने इंडिविजुअली डिसाइड कर लिया. कुछ स्कोर बेस्ड भी होते हैं, आपका स्कोर कितना आ गया. अब अच्छी बात भी और बुरी बात भी है कि स्कोर ख़त्म हो गया यू असेंबली एग्ज़ाम्स में, एटलीस्ट स्टेप 1 में. सो उसमें ये होता है कि आप फिर वाइडली अप्लाई कर सकते हैं, किसी को नहीं पता आपका स्कोर क्या है, और आप हर प्रोग्राम में जो IMG फ्रेंडली आप कर सकते हैं. सो दैट्स बेसिकली द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम्स फॉर द मैच. Chale, that's good to know. Yeah. अब moving forward, so once you did get matched, आप गए थे, I think आपके थोड़े options आपके finalize होते हैं, then you go through the interview process. तो उसके लिए आपको physically वहाँ जाना होता है. What is that process like, and what do you mean by match? So do you get associated with a particular hospital? उसकी भी थोड़ी हम अगर तफसील करें तो. सही. तो जब वंस यू सेंड आउट योर एप्लीकेशंस, within hopefully like 15 to 30 days you should start hearing back from the programs. They'll invite you. Now pre-COVID everything was in person. Now I feel mostly they've done it virtually, but I feel some programs they still prefer, they'll give you the option now to come in person. अब in person का उस टाइम पे एक फ़ायदा ये था कि you would end up like what I heard, IMGs would get more interviews because initial preference होता है programs का भी कि American medical graduates को interviews दे, और American medical graduates जिन जगह पे उनका इतना preference नहीं होता था वो interviews reject कर देते थे कभी कभी. तो आपके पास ज़्यादा chance होता था in order to get back those interviews as well. Now it's like, but going in person can be very tough. कुछ programs इतने दूर होते हैं, coordinating your interviews in person was a challenge in itself, which I did. I feel it was an amazing journey for me. मुझे मज़ा आता था, मैं बस में बैठ के 10 घंटे दूर जा रहा हूँ, कभी 12 घंटे की राइड पे जा रहा हूँ, and I just feel कि मैं उसको as a vacation ले रहा था. Obviously nothing like a vacation, stressful होता था, but उसको I would take it in a positive कि यार I'm getting to see places, right, as well. And उसके बाद जाके once you saw the programs by yourself आपको एक ज़्यादा अच्छा picture भी मिलता था, क्योंकि जब आपने US कभी ऑब्वियसली हर जगह तो विज़िट नहीं की हुई होती, और मेरी भी आई थिंक वो फर्स्ट सेकंड ट्रिप्स में से ही थी, तो आपको एक बहुत अलग परसेप्शन होता है US का. आपको लगता है कि ये न्यूयॉर्क और शिकागो ही US है. मुझे ऐसा लगता था जब मैं नहीं गया था, बट वंस आई वेंट देयर आई रियलाइज़ कि बहुत रिमोट जगहें भी हैं जहाँ पे इट्स द लाइफ इज़ नॉट एज गुड. आप नहीं रह सकते. स्पेसिफिकली हम लोग जो एक बड़ी सिटी से आते हैं, कभी रहना बहुत मुश्किल होता है. तो फिर मैंने एटलीस्ट अपनी जगहों को मैंने जब शॉर्ट लिस्ट की थी अपनी लिस्ट को इंटरव्यूज़ देने के बाद, I was able to pick and choose थोड़ा बहुत. अब मेरा अच्छे थे कि I got a good number of interviews, so I was able to rank them according to my preference. But अब जो हो गया, अब सब virtual हो गया. So virtually the good part is it's obviously much less expensive. वो effort आपका बच जाता है, वो पैसे भी बच जाते हैं, which is a big thing अभी, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मैच प्रोसेस से इसीलिए डरते थे कि US जाके करेंगे कैसे ये चीज़ें. तो अब वर्चुअली आप अप्लाई करो, आपके इंटरव्यूज़ आप स्केड्यूल कर दो, एंड मोस्टली अगर आपको इन पर्सन जाना है, आप हैं US में, तो आप जा सकते हैं. दैट कैन ईदर मेक योर चांसेस एंड समटाइम्स रूइन, बिकॉज इन पर्सन जाके कभी कभी आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको ना पसंद है, जो वर्चुअली आप यू कैन समटाइम्स बी बेटर एट हाइडिंग. बट ये है कि आपके चांसेस बन सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं उससे, बट पीपल डू दैट समटाइम्स, तो अच्छा रहता है उनके लिए भी, बिकॉज दे वांट टू गो एंड सी द प्लेस. ओके, सो वंस you've मैच्ड, ठीक है, अब आप अज्यूम करते हैं कि आपने एक हॉस्पिटल के साथ आपकी एसोसिएशन फाइनलाइज हो गई है, यू फ्लोन इन. तो आई वुड नाउ लाइक यू टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द प्रैक्टिस. We hear terms like residency and fellowship, and they have varying durations. Um, Inshallah, later on, I also want to talk about different practices. Surgery alag hoti hai, medicine alag hoti hai. We'll come to that later as well. But in terms of the structure of the training itself, how does that work? What is residency? What is fellowship? And when are you actually done with the entire training process? So match basically like match works as in आपने अपनी rank list बनाई, and then the program where you interview, if they like you, they'll make you their own match list. And once there is an algorithm पूरा उनका होता है बना हुआ कि they'll see के
closest match क्या बन रहे हैं, that's where basically if they've ranked you high and you've ranked them low, you might miss out on that program. All right, and if you've ranked a program high and somewhere in the middle, you could end up matching there. So that's also a process. You got to read. You got to read the interviewer well as well. Sometimes, yeah, sometimes they'll give it out, although they're not allowed to give it out. But उनकी एक intention पता चल जाती है कि they're gonna match you. So you want to rank that program high. Once you matched, residency, again, different programs have residency is not like, it's not a blanket, like it's not आप कह सकते हो कि यार सबकी residency tough होती है, सबकी residency easy होती है. Programs बहुत differ करते हैं उनके structure में, ठीक है. So जिससे मैंने की थी न्यूयॉर्क में, ब्रॉन्क्स में, जो कि मेरा प्रोग्राम काफ़ी रिगरस और बिजी था. अब जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ का रेजिडेंसी प्रोग्राम रिलेटिवली ईजियर है. बट ऑब्वियसली उसके मुझे रेजिडेंट ज़्यादा ओवरवेलम लगते हैं, बिकॉज उनको जब भी थोड़ा लोड बढ़ जाता है, दे फील के काफ़ी टफ हो गया उनके लिए काम करना. और हमारे लिए वॉज इवन एन ऑप्शन. हमारे पेशेंट्स हमेशा लोड अच्छा रहता था, ठीक है. सो रेजिडेंसी में यूजली इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी में 3 साल होते हैं. एवरीबडी से द इंटर्न ईयर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसमें आपको एक तो सारा सिस्टम सीखना होता है, जान पहचान बनानी होती है. यू नीड टू नो द पीपल, लाइक इन ऑर्डर टू वर्क इन अ हॉस्पिटल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो द कंसल्टेंट्स, यू नीड टू नो द नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, हर कोई. वरना आपकी चीज़ें, आपको कम्युनिकेशन इज़ द की उधर. आपको हर जल्दी काम कराना है तो सबसे कम्युनिकेट करना है. तो पहला साल आपको उसी में जाता है. और दे बेसिकली दे थ्रो इट एट यू. मोस्ट प्रोग्राम्स they'll throw you in it like right away. They'll give you like 8-9 patients to see. Obviously there's a lot of supervision. The attendings, they are always supervising. You feel you're like you're about to make a mistake, but somebody's looking out, your senior resident is looking out. So that's what I realized. Initially I was very nervous when I went in कि यार कैसे करेंगे, कैसे देखूँ मैं 8 patients की चीज़ें कैसे याद रखूँ. But somehow somebody was kind of overlooking everything, and in that process you learn and grow a lot. So वो फर्स्ट ईयर होता है. सेकेंड थर्ड ईयर मेरे लिए कंपेरेटिवली ईजी था. वी हैड कोविड विच इज़ अ डिफरेंट which changed the dynamics entirely for us during the second year. But उसके अलावा मेरा second third year I would say was relatively easier, just because I knew the system. और अच्छा रहा था उस टाइम पे. So 3 years of internal medicine residency, and after that you could go into a fellowship. If you're picking internal medicine, you could go into number of fellowships including cardiology, nephrology आप कर सकते हैं, critical care कर सकते हैं, pulmonology कर सकते हैं, just to name a few. And most of those fellowship trainings take about 2 to 3 years, or sometimes up to 4 years, depending on if you want to subspecialize. So there's no end to training. Basically, you can continue training as much as you want, in these some of these fields. So average मैं कहूँगा 6 से 7 साल में आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, और 3 साल में आप एज अ इंटर्निस्ट बन सकते हैं. इंटर्निस्ट बेसिकली मैनेजेस एडमिटेड पेशेंट्स, या आप क्लिनिक में भी कर सकते हैं एज लाइक अ फैमिली. यहाँ पे जैसे जीपी कहते हैं जिसको, जनरल प्रैक्टिशनर, आप एज अ फैमिली मेडिसिन आप क्लिनिक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर 3 years ऑफ योर इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग. A hospitalist, basically what I do is I managed all the patients that are already admitted to the hospital, and sometimes I could be admitting patients if an ER physician identifies a patient to be admitted. So that's what I do. And then if I need a consultant's opinion or help, I'll ask them to, I'll call them in as well, to help co-manage the patient. But अक्सर ये होता है कि simple चीज़ें अगर है तो आप खुद ही manage कर सकते हैं. If things get a little complicated, you involve the specialist in it too. So that's basically what, internal medicine residency is, 3 years, and then after that you can specialize. If you want to go into surgery, that's different entirely. I guess general surgery is about 5 years of residency training, and then you can subspecialize in 1 or 2 years more if you want to just like focus on one area. Otherwise you could be a general surgeon. And उसी तरह से लोगों को जैसे रेडियोलॉजी उधर डिफरेंट फील्ड है, डर्माटोलॉजी की अपनी रेजिडेंसी है. Once again, this is the perception, this is what we were told. Some fields are much more difficult to get in because those are more AMG, American Medical Graduate. आप वहाँ से अगर पढ़े हुए हैं तो आपको वो चीज़ों में ज़्यादा easier होता है आपका pathway, specifically dermatology, radiology, even surgery itself. Surgery is a very competitive field over there. And also a lot of people don't go into that because the lifestyle can be very tough in surgery. Because ट्रेनिंग जैसे मेरी इंटर्न ईयर रहा, उनका पूरे 5 साल मैं सुना है कि एटलीस्ट आपके फर्स्ट 2-3 years तो आपके जाते हैं उस तरह से. वंस यू बिकम अ सीनियर इट्स रिलेटिवली ईजियर. बट स्टिल जब हमारा दिन हम शुरू कर रहे होते थे, उनके 1-2 केसेस हो चुके होते थे उस टाइम तक. वो सुबह 5 बजे से आगे शुरू कर रहे हैं, हम ऑफिस 7 बजे आ रहे हैं. सो
I couldn't imagine, working like that, सही है. I thought कि मेरे लिए सुबह 6 बजे उठ के काम करना भी, it's like obviously it's not that easy, but वो लोग हमसे 1-2 घंटे पहले उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, and they're not home until much later in the day as well. So that is a very tough lifestyle in itself. Unless आपको बहुत ज़्यादा शौक है उस चीज़ का, सर्जरी का, only then you can survive through some of those residencies. People find it tough to even go through internal medicine residency, depending, कि कितना, sometimes people realize they go into it and then realize कि उनको इस चीज़ का इतना शौक नहीं था. That's when it gets really tough for them. Some programs can be, they call malignant, which means tougher programs. And they really, juice you out, so आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है वो टाइम पे भी, चीज़ें आपकी मैनेज करना, especially if you have a family or other commitments during that time as well. So this is an interesting point that you make. You just mentioned that some people find it difficult in residency because they realize this is not what they signed up for. Right. And I want to tie it up with something you said earlier, that when you started researching in the first 3 years of your med school, you were already starting to explore what your future options were going to be. Right. And I think that's a very relevant point, because most students that we work with and we counsel and we talk to come to us typically in their final year of their degree, be it medical school or other professions. And by that time, they are limited to whatever we tell them, and they don't have that exploration possibility. So, in your mind, how important do you feel was the fact that you had started your research early and it really helped shape the future that you wanted to pursue, and it did turn out to be the right choice, primarily because you started early? Right. I mean, you could say it turned out to be the right choice. मेरा interest जो था initially cardiology में बहुत ज़्यादा था. All right, because I started off, I did some rotations there. It just interested me much more than any other field. So that's when I decided, okay, I'll go into internal medicine. Like, I think it's research करके itself, it can help you, but sometimes what helps more in our profession is go do some rotations in that field, and that's when it will spark your interest in that. आपको नहीं समझ आएगा research करके, आपको कैसे पता चलेगा कि यार cardiologist क्या करता है, like it's never the same. आपको कैसे पता चलेगा एक critical care doctor क्या करता है या hospitalist क्या करता है. So basically rotations जो मैंने की, मैं अपने सारे med school के भी free time में, जो भी हमारे बीच में winter time आता था, हम चले जाते थे. आई नो हम हमारी एक शिफा हॉस्पिटल थी और आ खान में हम जाके अपनी रोटेशंस करते थे. वी वुड जस्ट गो टैग अलॉन्ग विद डॉक्टर्स एट दैट टाइम. सो मुझे याद है मैंने कार्डियोलॉजी में की थी, मैंने नेफ्रोलॉजी में की थी. आई रियलाइज्ड आई लाइक्ड इंटरनल मेडिसिन फील्ड्स मोर. सर्जरी मैंने जाके रोटेट किया था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हुआ वहाँ पे. सो आई काइंड ऑफ न्यू कि मुझे सर्जरी की तरफ शायद नहीं जाना. और मैंने अपने इंटरनल मेडिसिन की फील्ड ही पिक की. यूएस जब मैं गया, मैंने क्रिटिकल केयर में रोटेशंस की, और मैंने फर्दर कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सारी मेडिसिन की फील्ड्स में और रोटेशंस की. तो उसमें मुझे पता चल गया था कि फ्यूचर में अब मुझे या तो क्रिटिकल केयर की तरफ जाना है, कार्डियोलॉजी की तरफ जाना है. अभी भी इरादा वही है, बट ऑब्वियसली लाइफ हैपेंस, थिंग्स हैपन, सो यूर लाइक लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड वेट. तो अभी मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बट आगे जाके इरादा मेरा वही रहता है कि यार कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर की तरफ मुझे इवेंचुअली जाना है. सो आई वुड टेल कि यार रोटेशंस करो अगर मेड स्कूल में हो और तुम्हें अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है, और आप करोगे 3rd-4th ईयर के बाद यू गो इनटू द वार्ड्स, एंड दैट्स व्हेन आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज उन्हें करना क्या है. बट स्टिल some people once they start practicing they realize इतना मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, और and that's when they find it very tough. Now being desis over there, पाकिस्तान से आए हुए हम लोग थोड़े rough and tough होते हैं, we power through things mostly, and eventually ठीक जो once you get into your practice residency ख़त्म होती है, life is very different. उस टाइम पे आपका एक although responsibility ज़्यादा होती है, but आपका workload, everything is much more in your control at that point. So that's when at times people start liking it more. I guess a lot of people don't like losing control, and residency, that's what it can make you do. It can totally make you lose control, because you're
they'll throw so much at you sometimes कि आप बोलोगे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता मुझसे, रोज़ डे ऑन, लाइक आपको ना वेकेशन टाइम लिमिटेड होता है, वीकेंड्स आपके समझो कि एक दिन का वीकेंड मिल रहा है, पीपल आर नॉट यूज टू दैट. हम पाकिस्तान में, मैं भी बहुत जब पढ़ रहा था मैं अपने हिसाब से पढ़ता था, एवरीथिंग आई फेल्ट वाज इन माय कंट्रोल, और आपके घर में हेल्प होती है, हर चीज़ होती है वहाँ पे, आपको हर बेसिकली द अदर थिंग्स दैट यू हैव टू डू अलॉन्ग विद योर रेजिडेंसी कैन समटाइम्स मेक इट वेरी टफ एज वेल. So that's basically, that's my advice, explore your interest early on. ऑनलाइन पढ़ने से, बात करने से लोगों से पता चलेगा, बट गो योर सेल्फ इन टू द वर्ड्स, अपने जो फ्री टाइम है उनको यूटिलाइज़ करो इस तरह से. उस टाइम पे आप इन कंट्रोल होता है, आप जाके जो रोटेशंस वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप अपने हिसाब से, आप जितना आपको एफर्ट डालना है आप डाल सकते हो. बट वंस यू गेट इन टू द रेजिडेंसी आपको रियलाइज़ करना है कि आपको मेहनत तो करनी है. उस टाइम पे ऑप्शन नहीं है कि यार आज दिल नहीं कर रहा तो छुट्टी कर लूँ, आज नहीं कर रहा तो नहीं जाता, या कम पेशेंस देख लो. So that would be my advice. Okay, go early on, go hands on early on, basically, to explore your interest, Yeah, at least in this field. That's good to know. एक एज ओल्ड क्वेश्चन हमेशा रहता है हर प्रोफेशन में कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, करियर प्रोग्रेशन क्या होगी, राइट. इन सम वेज मेडिकल प्रोफेशन में इट सीम्स टू बी अ लिटिल वेल डिफाइंड, बिकॉज क्लैरिटी होती है कि रेसिडेंसी करनी है, फेलोशिप अगर आपको करनी है तो आप उसकी तरफ जाएं इफ़ यू फील दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, otherwise you start practicing. But in terms of career prospects, in terms of opportunities, what are the do's and don'ts? How do you navigate that? As we've spoken, residency is something you match for, so आप यहाँ से चले तो गए, but अब वहाँ पे पहुँच गए, what should be the necessary steps that you must take in order to ensure a smooth career progression? और ऐसे cases क्या होते हैं कि people have to come back. तो करियर प्रोग्रेशन के हवाले से व्हाट आर योर व्यूज़? सो जैसे आप रेजिडेंसी में डूज एंड डोंट्स के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें, सो वंस अगेन वही बात आती है, वहाँ पे अगर आप सिंसियरिटी आप शो नहीं कर रहे ना अपने काम में, तो इट विल बी वेरी इजीली अपेरेंट. आपको कोई मुंह पे नहीं बोलेगा वहाँ पे कि यार तुम सही से काम नहीं कर रहे. ऑब्वियसली इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा, बट पीपल विल रियलाइज़ अगर आप लेट आ रहे हैं काम पे थोड़ा सा, तो पीपल विल सी सटल कमेंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन कोई आपको सामने नहीं बोले इट्स ओके. आपको उस सामने आपकी यही बोला जाएगा नहीं इट्स ओके, आप फंस गए थे, कुछ मसला था, आप एक दिन लेट है, दूसरे दिन लेट है, ये चलता रहेगा, ठीक है, बट दिल नो कि यार ये बंदा स्लैक ऑफ कर रहा है, ठीक है. वो चीज़ें कभी लोगों को बहुत पुश बैक करती है. यू कैन टोटली लूज़ योर प्रॉस्पेक्ट फॉर अ फेलोशिप इफ़ यू पुट वन बैड इम्प्रेशन ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी. बिकॉज वो अगर उस डॉक्टर को पता चल गया ये बंदा काम चोरी कर रहा है, वो कभी आपको आगे रेकमेंड नहीं करेगा. उधर वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है. इधर जैसे उस चीज़ को आप सिफारिश कहते हैं बुरे तरीके से, उधर एक्चुअली रिकमेंडेशंस होती है, और आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है जिस पे आप रेकमेंड करते हो किसी को. तो अगर मुझे आपको रेकमेंड करना है, मुझे पता है कि यार आप लेट आते थे रोज़ रेजिडेंसी में, मैं नहीं चांस लूँगा अपनी रेप्यूटेशन पे आपके लिए, भले आप मेरे कोई भी जितने भी करीबी रिश्तेदार हो, मैं नहीं लूँगा आपके लिए वो चांस, क्योंकि मुझे पता है कि कल को फिर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी. और आप उधर ये बड़ा कल्चर है कि आप मना कर सकते हैं किसी को अगर आप रेकमेंड नहीं करना चाहें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग रेजिडेंसी. एक अच्छा आपको सिंसियरली काम करना, आप एक मेहनत तो सभी कर रहे होते हैं, बट आपको वो भी शो करना है कि आपको मज़ा आ रहा है मेहनत करने में. लेकिन अगर आप सिंसियरली करेंगे तो आपको आएगा भी मज़ा. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कमिट करके करते हैं तो आपको बहुत इन्जॉय करते हैं आप अपनी रेजिडेंसी, बिकॉज इट्स अगेन लाइक कॉलेज. एंड आपके वही होते हैं, आप उनका पूरा दिन स्पेंड करते हैं, दोस्त होते हैं, हर चीज़. तो आई वुड से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज़ को इन्जॉय करें, उस प्रोसेस को, एंड दैट विल शो. एंड लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इसको एक्चुअली ये चीज़ करनी है, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट बेटर चांसेस इन द फ्यूचर. सिमिलरली फॉर जॉब्स एज वेल, आपको रेकमेंड कौन करता है? आपका प्रोग्राम डायरेक्टर करता है, and they closely observe you. Everything during residency does get kind of reported, not like in a scrutinizing way, but वो पता चलता है कि यार ये बच्चा लेट आता है, ये बंदा काम नहीं करता सही, इसकी क्लिनिकल जजमेंट इतनी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल. and they'll work on you as well, unless you're not willing to work on it. वो एक बार वो लोग ने रियलाइज़ कर लिया, फिर वो लोग आपको ऑब्वियसली वो लोग भी अपनी तरफ से इतनी मेहनत नहीं करेंगे, बट आगे जाके वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वंस यू रीच, हमारे लिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए वी नीड वीज़ा टू कंटिन्यू वर्किंग इन द US. So you need to easily find those jobs which will sponsor the visa for you, all right, and you might have to go into an underserved place.
Underserved doesn't necessarily mean a far-flung place कहीं आप बहुत दूर चले जाएं. It could be in a major city as well sometimes, because उधर obviously हालात सही थे, crime rate है कुछ है, उस वजह से उधर doctors नहीं है ज़्यादा, या फिर उधर sick population बहुत ज़्यादा है और doctors कम है. So that could also be an underserved place. So you need to kind of start researching. मैंने अपने second year से ही almost देखना शुरू किया, और third year तक I started researching, applying for jobs at least 6 to 8 months in advance before my graduation. And that's also when you start building up your contacts. You speak to local अपने जो doctors होते हैं, अपने attending से आप बात करते हैं, आप बाहर के doctor से बात करते हैं. That's when you can either, if you want to go towards a fellowship, you need to put in a lot of more effort. Research करनी पड़ती है during your residency. That's also again कुछ लोग को interest नहीं होता. Research can be very boring, it can be very interesting for some people. So वो भी आपको early on start करना है. You need to get yourself published out there during your residency if you want to go into a fellowship. So that's a major. First of all आप अपना pick करें interest. First second year में आप एक अपना interest pick करें, और second year to third year आप उस पर काम करें, because third year में आपको apply करना है, and that has to show on your CV. Alright, so बहुत सारे लोग होते हैं वो residency के 3 साल जैसे मैंने अपने interest explore किए. I went for a job, and now I'm gonna, like, if I want to go towards a fellowship, I have much more time and comfort to build up my CV towards that fellowship. Alright, but if you have decided on a fellowship, go for it. I would say after your residency, you have better chances. You're more relevant with the system. Then once you get into a job, आप थोड़ा सा teaching side से हट जाते हैं, unless आपका heavily university program है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वरना आप teaching side से हट जाते हैं तो उस तरफ आना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है वापस. तो I would say कि if you want to go into a fellowship, go into it right away after your residency. Or else if you're not decided, it's always okay to wait there. आप जितने साल बाद भी जाना चाहिए US में, अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे 50 साल की उम्र में भी towards a fellowship, आपको वेलकम किया जाएगा. मुश्किल होगा लेकिन आपको वेलकम किया जाएगा उस तरफ. So there, it's never too late, उधर करने के लिए कोई चीज़ आपके लिए. ठीक है. Dr. Ibrahim, I think we've sort of covered the major elements, I think, in terms of your progression after med school. Again, if we look at it from a holistic standpoint, what would your final comments be for any prospective medical graduate to explore his options in the US? So if there is something that we haven't really talked about, maybe we want to explore that. So any final thoughts that you have regarding the medical profession in the US? Right. So again, like I said, I'll just summarize some of the things that we said, in a simple way. Ke early on in your med school, start, doing the rotation, start exploring your interests. Don't waste your time there. बात करो अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से स्पेसिफिकली, उनसे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है. So go ahead and speak with them, especially if you want to go outside and practice, because again, you learn a lot. Med school is 5 years. I know you study a lot of material, but you learn only during your practice. And US residency is a very good, way to, kind of accumulate all of that knowledge, and put it into practice. क्योंकि काफ़ी एक तरीके से आपके लिए there's a lot of support, lot of help there. So I would recommend, अगर आपका interest है, so do that early on in your, med school. Start exploring those things early on in your med school. जितना जल्दी आप start करते हैं अपनी पढ़ाई को, फिर आप exams के structures को समझ के, just start studying that way early on as well. And that way, by the time you reach your final years, you could be very well ready for a USMLE step 1. And once you do that, आपके लिए chances बहुत खुल जाते हैं. They only start taking you US में seriously once you've given, one of the steps. That's when they also realize कि actually आना चाह रहा है. And that's when, the doctors also you approach for rotations and stuff will respond back to you. So those things are important. बाकी once, you get there, like I said, sincerity आपकी होनी चाहिए. मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना है, because it's never going to be easy, It's going to be tough, but you can make it fun for yourself if you're sincere to it and if you're fully committed towards that. And don't think it's going to be an easy way out. Don't think कि भाई बड़ी easily lavish lifestyle हो जाती है, या उधर जाने के बाद बस party है या इस तरह की चीज़ें है. Because obviously you can do all of those things, but आपका main focus आपकी residency और training की तरफ होना चाहिए उस time पे. Good to know. So thank you so much, Dr. Ibrahim, for joining us today and enlightening us with the medical profession US के आपकी practice के हवाले से. So thank you once again. Thank you for joining us for this particular session regarding the medical profession and specifically
practice in the US. We'll see you next time. Thank you.